had a role to play. I think everybody will agree. With this new avatar of these research institutions, hopefully we will be able to do the justice for all. We will be able to do justice for the regions. I, on this occasion of this Teachers' Day, once again greet you, and we are looking forward for this multicolored cultural program. Don't miss it. It will start after a few minutes. Thank you very much. बिना फ्लैश का अच्छा आउटपुट आ रहा है. Thank you, sir. As we begin our program, we would like to remember and pay our tributes to the great personality in whose honor we celebrate Teachers' Day. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the second Vice President of India, but also is known not only as a politician but more so as a statesman and as a teacher. So in his honor, today we celebrate the Teachers' Day, and to pay our tributes to him, may I request our Honorable Vice Chancellor, sir, the President of TUTA, the Secretary, Professor Nasreen Islam, Professor Charulata Mahanta, to kindly come forward, and Professor Farina Danta to come forward and light the ceremonial lamp. Thank you, everyone. Thank you, sir. At this moment, we would like to take the time to felicitate our Honorable Vice Chancellor, Professor Vinod Kumar Jain, who has been with us since the last 4.5 years. And as a teachers' organization or a teachers' association, we have never gotten an opportunity to felicitate him as one of the most senior-most academicians in the university. And we take this opportunity today to felicitate you, sir, on this grand occasion. I would like to request our President to kindly accompany our Honorable Vice Chancellor to the stage, and I request Professor Madhumita Barbara to felicitate him. I would like to request, sir,
to kindly address the gathering. The Honorable President of TUTA, Professor T.C. Baruah, the Secretary, Dr. Pranjal Gogoi, distinguished faculty members, past and present. First, let me greet you all on this very auspicious occasion. As you are all aware that this is the day we remember all our teachers, right from our school days, right up to the higher education. It is the day when we express our enormous gratitude to all the teachers who have paved the way for our careers and who have been instrumental in making us whatever we are today. It is also a day to pay our gratitude to all those teachers who have shaped the destiny of countless youngsters by capacitating them with the required knowledge, with the skill sets, but more importantly, and this happens to be the teaching profession, since it happens to be one of the most noble professions, more importantly, they are also instrumental in making our youngsters more humane and socially sensitive. And it is this role which the teachers play in empowering a society, in empowering a nation, that we should ever be so grateful to all those who have contributed in this empowerment of our country and who continue to do so. It's the teachers around whom, as has been said, around whom the educational institutions evolve. And as someone has said, in fact, I think it is Dr. Radhakrishnan, who has said that the greatness and the prestige of any institution is determined not by the buildings and the equipment, but by the scholarship and the character of the teachers. An equally profound saying is that the good teachers are the reason why an ordinary student can dream to do extraordinary things. And in the case of our country, since independence, I think the generation after generation has been or has dared to dream, and that's why our country has made some very impressive achievements in all sectors. But the challenge before all of us as teachers is quite enormous. We have to keep abreast with whatever changes are taking place, whatever churning is going on in the country as far as the higher education sector is concerned. And this churning is also something to do with a very highly globalized competitive world, where we have to keep abreast with the best in the world if we really want to figure in the top 4 or 5 countries of the world. And it is in this context that the teachers have to really keep abreast with whatever advances are in their respective domains, and also be able to train the youngsters with the latest skills which are required in the contemporary context. And it is here
that the new education policy, which we had to sort of implement in our institutions, and it is here that you have a bigger role to play in its implementation. Because what is required from every one of us as teachers is to instill the spirit of inquiry, the spirit of creativity, of creativeness, innovativeness, and entrepreneurship. And it is this challenge which we have to all put our efforts together and make our institution progress further and become among the top institutions in the country. And I must congratulate all of you because I have personally witnessed all the HODs, the deans, the director IQAC and the NET team, and each one of you really having worked tirelessly, very sincerely, diligently in getting this A+ grade. So, since I may not be there to address you in the next time of calling on this day, but I really wish you the very best for the growth of this wonderful institution. It has been a privilege to have worked with you. Thank you. Thank you, sir, for your words. We would also like to say that it is an honor and our privilege to work under you. And thank you, ma'am, for the felicitation. We have two of our former professors with us. We are going to felicitate them. I request Mandakini and Devoji, the organizers, to kindly escort our guests, Professor Ananta Kumar Nath, Department of Hindi, and Professor Manabendra Bhuyan, retired professor from the Department of Electronics and Communication Engineering. I request the Vice President of TUTA, Dr. Paul Bora, and the Secretary, Dr. Pranjal Gogol, to kindly felicitate them. Thank you. I would also like to request Professor Nath and Professor Bhuyan to kindly say a few words. Honorable Vice Chancellor of Tezpur University, Professor Jain sir, and my lovely teachers, colleagues, ex-colleagues, now also many of my colleagues at in the department who are present here. And I am delighted to be here this evening on this auspicious occasion of the Teachers' Day. And I thank the Tezpur University Teachers Association, Dr. Professor Baruah, Mandakini, who has called me by telephone several times, whether I will be coming. I was at the Guwahati actually yesterday. So I thank them for inviting myself and Professor Nath to get a new environment. Means after a long time I am came here, and delighted to be here. First of all, I like to once again say that I congratulate the university, I congratulate the Vice Chancellor, I congratulate all the teachers for being
accredited by NAC this recently when they passed grade, and it is only by the effort of the teachers, the effort of the administration and the students, and I hope that the university will march forward with better accreditation in future. At this moment, I remember the days of the university, when we started the university. Always we become nostalgic in front of this, my old colleagues, how the university was started, what are the hard times we have to pass through. I can say that always compare the journey of the university with the cycle of a butterfly and the caterpillar. The days of the caterpillars are not very good, and when the caterpillar it converts to a butterfly, a very beautiful butterfly, and it flies in the search of knowledge and wisdom. And we have spent a day at the beginning. Many of my colleagues like Professor Nasreen, Professor Murumita, and many other my colleagues like Satyajit Bhatto, Professor Sahu, and I don't know who are there from the beginning. How hard time we have spent in this university. We have walked down from First Mile with knee-deep water, without missing a single class in the university. And the days were very hard for us at that time. And I remember the day where I was the DSW, Dean of Students Welfare. During the First Mile bridge was washed away by flood that year. I was the dean, and the communication was totally closed from the outer world. And the students started revolting. 4-5 days, they were without food, without money, without telephone. And how we have to conceive the students, persuade the students that we are trying to give you a vacation of at least 6 days, but that was not done, and I have to come to the university because the VC is residence of the Tezpur town. And myself with Sadhan Mahapatra, and I remember Satyajit Bhatto, we had come through the boat to this university to see the students, to persuade the students. Then we went to the city, town, Tezpur town, to get a notification that the university has been, the classes has been suspended for 6 days or something like that, I forgot. Tezpur University with the sailing of a boat, like in the small boat, we started our journey in Giaboroli, then the boat came to the river Brahmaputra. We have changed the boat, the captain has been changed, and some of the captains have made the boat bigger. It became a big ship, and finally we are in the Bay of Bengal and going to the Pacific and in the shards of knowledge. So this is the journey that I remember, and today I feel very proud to be here as a teacher who was working here. I tried myself very hard to love the students. As Professor Baruah told that Guru Hi Brahma, Guru Hi Vishnu, Guru Hi Maheshwar. But I didn't tell the students that Guru is never a very angry Maheshwar. Maheshwar is generally very angry and he can destroy if he is very angry. But I tell the students that we are not that type of Maheshwar. Even though we are angry,
will take care of you. And I'll not speak much. For a long time I have not been giving a speech also. I see some students in a Tezpur Science Academy as a rector. I spend my days with them very joyfully. All are very young, class 11, 12 students. And I loved the days, spending days with them. And at last I hope that the teachers of Tezpur University will march forward for a better ranking in NAC, in future, for engineering, in MBA, and many other accreditations. So I will complete my speech with last stanza of Robert Frost's very important poem, very popular poem. The woods are dark, deep, and I love, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. With this I conclude. And once again I thank Tezpur University Teachers Association for inviting me and feliciting me in this auspicious occasion. Thank you very much. नमस्कार। आदरणीय कुलपति महोदय जी, प्रोफेसर देवेंद्र बरुआ जी, मंदाकिनी जी, आज इस उत्सव में मुझे यहाँ बुलाया आप लोगों ने, मुझे बहुत अपार हर्ष हो रहा है। और मुझे बहुत ये खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। मेरा अनुभव जो टीचर जो है, मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से सीधे हाशीमारा के एयरफोर्स कैंपस में और स्कूल में ज्वाइन किया था जो प्राइमरी टीचर। लगभग 1.5 महीना वहाँ मैंने काम किया। मैं आज के इस अवसर पर, चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, आप लोग भी शिक्षक हैं, और बधाई है सब लोगों को। थोड़ा सा अनुभव मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हमने कबीरदास को पढ़ा बहुत। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और असम के रहने वाला हूँ, असमिया भाषी हूँ। हिंदी सीखने में मुझे बहुत समय लगा, और ख़ास करके हम असमिया भाषियों के लिए हिंदी उच्चारण जो है वो काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन चूँकि मैं लोअर आसाम का हूँ, ग्वालपारा जिले का रहने वाला हूँ, मेरा उच्चारण जो है थोड़ा सा करीब करीब आ जाता है, बंगाली के करीब भी आता है। हिंदी के उच्चारण संबंधी उसमें ज़्यादा गलतियाँ नहीं थी। तो मैं वहाँ पहुँचा तो टीचर और विद्यार्थी में जो अहम चीज़ है वो है प्रेम। प्रेम से सबको जीतना जरूरी है। मैंने वहाँ ज्वाइन किया, और मैं जहाँ मुझे रखा गया था हॉस्टल में, वहाँ एक बंगाली फैमिली थी। तो फिर उन लोगों के बच्चे थे जो है वो, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में एक बंगाली टीचर आया है, हमारे स्कूल बंगाली सर से हिंदी टीचर, और खूब ভালো মানে ভাবে ভাবছে যে আমি বাঙালি। तो उसके बाद जो भी हो, चाहे बंगाली हो, असमिया हो, बिहारी, यूपी, कहाँ के भी हो, हम लोग भारतीय हैं। और यही महान सोच है, विचार है कि हम सब भारतीय हैं। और टीचर और विद्यार्थी में कोई तो फर्क होता ही नहीं है। हाँ, गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो अपने शिष्य से कुछ नहीं लेना चाहिए, और शिष्य भी ऐसा है कि अपने गुरु को सब कुछ देने को तैयार रहे। यही शिक्षा कबीरदास ने दी थी। तो मैं फिर वहाँ से हिंदी विभाग, हमारे जो जिला का जो कैपिटल है धुबरी, वहाँ भोलानाथ कॉलेज में हिंदी विभाग खोला। तो मुझे वहाँ अवसर मिल गया हिंदी विभाग का खोलने का।
वहाँ आया तो वहाँ भी मैं हिंदी के लिए काफ़ी काम किया। वहाँ भी बच्चे मेरे आगे पीछे लगे रहते थे। बच्चे जो है वहाँ हिंदी खोल दिया, ऑनर्स भी खोला वहाँ। फिर वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट बन गए बच्चे। लेकिन मेरे ज्ञान से अतिरिक्त सब्जेक्ट का ज्ञान चाहे कुछ भी हो मेरा, लेकिन अपने प्यार से हम लोगों को ऐसे सजो के रखा था मैंने वो सब। और वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट बन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में ऑनर्स में। वहाँ कुछ दिनों का काम करने के पश्चात मैं दौरान कॉलेज में आया तेजपुर में। तेजपुर में आते ही देखा कि वहाँ बहुत दिनों तक सिर्फ MIL पढ़ाया जाता था। 2 ही टीचर थे उसमें सेंट्रल पोस्ट के। और हिंदी को आगे बढ़ाना है चाहिए कुछ और भी, वैसे इसमें कोई उसमें वातावरण मैंने नहीं देखा। लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल जो थे भूटाराम जी और कुछ ऐसे टीचर थे, उन्होंने कि नाथ जी आप हैं तो कुछ कीजिए काम। तो मैंने भी यहाँ आके रहे कि सर तो फिर ठीक है, आप लोग आशीर्वाद आप लोग का होगा। तो फिर हिंदी ऑनर्स के लिए मैंने अप्लाई किया। हिंदी ऑनर्स खोलने के लिए हमको चाहिए हिंदी एडवांस हिंदी, इलेक्टिव हिंदी कुछ चाहिए यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए हमने कहा उन लोगों ने तुरंत वो सब कर दिया और हिंदी ऑनर्स भी यहाँ खोल दिया। हिंदी ऑनर्स खोलने के पश्चात तुरंत जो है यहाँ भी बच्चे जो है दौरान कॉलेज में काफ़ी अच्छे बच्चे आते हैं। पहले सेकेंड लैंग्वेज खोल दिया तो काफ़ी 21 बच्चे जो है एग्जाम में बैठे थे। तो टीचर बोले थे एजुकेशन को हो लिया है दोनों कॉलेज एजुकेशन निश्चय जो नाक्षर काम। तो ऐसे हो गया कि हमने फिर ऑनर्स खोल दिया। उस समय काफ़ी जो है वो प्रिंसिपल वहाँ थे, सिंह सर थे, आनंद कुमार सर थे। उन्होंने कहा कि नाथ साहब आप ऑनर्स मत खोलिए, आपसे नहीं हो पाएगा, यहाँ आपको सहयोग नहीं करेंगे, ये लोग केवल कहाँ इधर उधर भागते तक क्लास नहीं करते। मैंने कहा सर वो नहीं है, ऑनर्स खोलना है आप दीजिए, अच्छा होगा, हम है कोई बाधा नहीं होगी। हिंदी के लिए वातावरण अच्छा नहीं था वहाँ, एंटी हिंदी प्रोग्राम वहाँ बैनर वगैरह लगा हुआ रहता था। फिर भी हमने कहा कि यही मौका है कि मैं हूँ हिंदी में ऑनर्स खोल देते हैं। हिंदी का ऑनर्स खोल दिया। यहाँ भी ऑनर्स में हिंदी के बच्चे जो है उनको गोल्ड मेडल मिल गए गुवाहाटी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोगों का ध्यान मेरी ओर आ गया कि नाथ जो है चाहे वो एक्टिव है, कुछ न कुछ करना वो जानते हैं। तो इन लोगों ने मुझे फिर प्रेरित किया कि आप अरुणाचल में आइए, अरुणाचल में हम हिंदी पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी उसमें होगा, आप भी से खुलवाएंगे। यह 6 साल काम किया। बच्चे काफ़ी छोटी थी बच्चियाँ, वो जाना नहीं, लेकिन सारे लोगों ने कहा कि आपको आना है। तो मैंने कहा गुरुजनों का जो आशीर्वाद है उनका भी उनको मानना चाहिए। तो मैं अरुणाचल चला गया। अरुणाचल में हालत भी जो अच्छी नहीं थी, कहने को तो सब लोग कहते कि हम अरुणाचली हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोल रहे थे, लेकिन ग्रामर वहाँ नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पढ़ा, यहाँ बच्चे थे। तो पहले जो है करीब 13 बच्चों ने एडमिशन ले लिया। 13 में से 7 बच्चे टीचिंग जॉब में चले गए, तो बहुत कम बच्चे रह गए। तो वाइस चांसलर जो वो उन्होंने मुझे कि नाथ के कारण बच्चे चले गए। फिर कॉलेज के टीचर ने कहा कि नाथ सर आप घबराइए नहीं, अभी अब इतने बच्चे हम लोग देंगे, आपके डिपार्टमेंट में जगह नहीं मिलेगी। तो हाँ, हर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिंदी का ऑनर्स उन्होंने खोला और इतने बच्चे हैं, हमने भी ऐसा प्रोविजन कर दिया कुछ जो है बच्चे वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कुछ प्रोविजन लेकर के ऐसा करके। तो ऐसे जो बच्चे काफ़ी हैं। और आज जो है मेरे आते आते वहाँ सारे फैकल्टी के पोस्ट जितने हैं वो फिलअप हो गए थे और बच्चे विभाग भी अच्छा चल रहा है वहाँ। फिर वहाँ से मुझे एक मौका, यहाँ पे कुछ नहीं था, मुझे ये आशीर्वाद ही है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी में मुझे आने को मौका मिला। यहाँ लोगों ने, मेरे मित्रों लोगों ने कहा कि आप आइए एप्लीकेशन दीजिए, ऐसा करके मैंने दे दिया और यहाँ भी मुझे नौकरी मिल गई। 2010 में मैंने ज्वाइन किया, जनवरी महीने में। लेकिन वातावरण यहाँ में मुझे अच्छा नहीं लगा शुरू में। यहाँ के वाइस चांसलर जो थे काफ़ी जो सख्त आदमी थे, डिसिप्लिन थे, उन्होंने काफ़ी विकास किया अंदर में, लेकिन वो वैसे ही किया। मैंने कहा कि हर मुसीबतों का सामना मुझे करना है। तो वहाँ भी टीचर बच्चों को मैंने पढ़ाया। बच्चे के एक माँ बाप तो हमारे घर में हैं
और एक माँ बाप हमारे डिपार्टमेंट में है नाक्षा अरुणाचल बच्चे, उनके पिता समूह में। तो मैं वैसे मैं क्या कर सकता, लेकिन मेरे गुरु को ही मैंने वहाँ बुला दिया था, गुरु जी को, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ करके हिंदी सिखाया था। उन्होंने ना जाने क्यों अरुणाचली बच्चों को थोड़ा सा रुलाया, हाँ, कि ऐसा नहीं चलो, ऐसा करो, वैसा करो। तो हमने कहा सर बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना, ये अरुणाचल है और यहाँ हिंदी ये लोग अपने आग्रह से कर रहे हैं, उनको उनको ठेस नहीं पहुँचाना है, दुख नहीं देना है। तो उनको पता नहीं था। तो फिर बच्चों को आगे तुम लोग बोलना नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसमें कुछ भेदभाव उन्होंने किया था, इसीलिए वो रोए थे बच्चे कि हमने कहाँ से जानते हैं। मुझे चूँकि वो हम नॉर्थ ईस्ट के हैं, ट्राइबल नेचर को हम जानते हैं और बच्चे भी मेरे पास ही आते हैं, तो भरोसे वो रहते हैं। आज भी वो बच्चे जो है मुझे पिता तुल्य मानते हैं। तो फिर वहाँ से मैं यहाँ आया। आने के बाद जो भी हुआ, यहाँ हिंदी हो गई, थोड़ा कष्ट हुआ, हमें मानसिक कष्ट बहुत हुआ। कुछ बातों में हमें पर्सनल दुख भी हुआ है कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ गाइड नहीं कर सकते, यू आर टू प्रूफ योर गाइडशिप हियर, इस तरह की बातों में जो मेरे लिए बड़ा अपमान सूचक था। तब तक मेरे 11 स्टूडेंट PhD होकर निकल गए थे, हाँ। लेकिन तो जब अगर उस समय का जो है वो ऐसे बोलते हैं, तुम, क्योंकि उनको हम मानते हैं, तेजपुर के सब लोग मानते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा पर्सनल जो है, इसे समाज में उनका स्तर बहुत ऊंचा है और वो ऊंचा ही रहे, लेकिन वो दुख मेरा पर्सनल है, हाँ। तो लेकिन मैंने, मुझे तो आता है, हाँ, मुझे भूखा रहने का अभी तरीका है और भरपूर खाने का भी मुझे वो आता है, सब कुछ है। तो उसको गया, लेकिन हुआ धीरे धीरे विभाग, हिंदी विभाग यहाँ का बना गया और अपॉइंटमेंट भी आज जो है, आज के समय में हिंदी विभाग पूरा संपूर्ण है। तो ये अच्छा है। मैं एक स्टूडेंट टीचर के संबंध में यही बताता हूँ कि स्टूडेंट हमेशा अपने टीचर से जो है वो एक सद्भाव, एक प्रेम भाव वो रखना चाहता है। वो श्रद्धा करते हैं, भक्ति देते हैं और टीचर से वो अपेक्षा रखते हैं कि हमारा टीचर हमारे माता पिता समान है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं इतना ही बोल पाऊँगा। बोलने का अभी धीरे धीरे ये जो है आदतें खत्म होती जा रही है। तो आप लोगों को मैं शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ। आप तेजपुर यूनिवर्सिटी का बड़ा ही एक यश है, नाम है, वो हमेशा ऊंचा रहे। हमें गर्व होता है कि हम जब आए थे यहाँ, मैं और पाठक बहुत अच्छे वो टीचर थे, हाँ। वो उनके जाने से मुझे काफ़ी दुख हुआ, विभाग को भारी नुकसान हुआ। हमारे खास करके लोकल बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है उनसे। तो वो हम लोग हमेशा उसको कुछ करते रहते हैं। इतना अच्छा माहौल इसमें, इतना बढ़िया है, डिसिप्लिन। कभी सर आएंगे 8 साढ़े 8 बज गए, डिपार्टमेंट में जाना है, बैठना है, वो सब करना नहीं है। लेकिन बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आती रहती है जो अच्छी नहीं थी। तो वो सब जो भी हो, एज ए टीचर, एज ए प्रशासक, हम लोग का संबंध हमेशा अच्छा होना चाहिए। एक माहौल वो था, उसमें हम लोग सम्मान इज्जत देते थे और विभाग भी यहाँ हो गया। हमें इसका काफ़ी सुख है, आनंद है। मैं आप लोगों को और हमारे सभी बच्चों को इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ साझा किया। अगर आप इसमें कुछ त्रुटियाँ हो गई हो, भूल गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं अपने जो दिल में, मेरे मन में जो दुख है, 2-4 दुख कभी वो मिटने वाला नहीं है। जो भी बात करता हूँ वो सबसे ऊंची आवाज़ दे करके वो निकलता रहता है। तो इसलिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।